पंजाब KP इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। कल जस्टिस अमीनुद्दीन के बगैर बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाएगा। कल सुबह 11:30 बजे बेंच आएगा। अदालती अमले के मुताबिक पंजाब KP इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत आज होना थी, जब कल होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि 5 रुकनी बेंच हो या 4 रुकनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्टेड हुकूमत, उनके हैंडलर और समझौता करने वाला इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि ये लोग इंतखाबात से इंतहाई खौफजदा और अपने सजा याफ्ता लीडर्स को पाक करने के लिए बेचैन हैं। ये पाकिस्तान की बुनियाद को खतरा बना रहे हैं, जो आइन कानून की हुक्मरानी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अब से कुछ देर पहले सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब किया है। आपको दिखाते हैं। While we are meeting here during the month of Ramadan, where as Muslims we observe or supposed to observe not only fasting and certain mandatory rituals, but also we are more supposed to think the efforts of fasting are supposed to encourage us to think about the less privileged, the bottom of the social pyramid, the poorer people who don't enjoy access to regular food, regular water, etc. And I think that's particularly poignant while we're gathered here in Islamabad with representatives from across the world, that there are people in all our societies, but particularly in Pakistan, who are facing incredibly difficult times at the moment. And absolutely, as Foreign Minister of this country, I should be able to admit, and I am ready to accept, that a lot of those difficulties are of our own making. Some mistakes that we, as the collective we, that as far as economic policy, etc., may result in. I often, in our speeches to Parliament, we refer to one of the former government's decisions. But at the same time, we're also facing, they're also facing the economic consequences of certain decisions that are also outside our control. And though that is true for people in my country, and that's true for people in your country as well. For example, we are facing the consequences of this devastating climate catastrophe, and the people who are suffering as a result of that didn't necessarily play such a role in the climate crisis that resulted in this catastrophe. That's the same for many people in your country, especially the younger generations, who are facing the consequences for decisions and actions of others. There's conflict, or there's the consequences of the COVID pandemic, which all of us are still facing today. The economic consequences of the COVID pandemic that has had economic consequences for my country and every single country sitting here today. And then obviously there's the heightened geopolitical context that we live in at the moment. And as a result of that, a lot of people in my country and in a lot of countries represented here today are facing the consequences of decisions that others are taking. The point being that, well, obviously everybody, we have to work together to address all these issues. We're reminded in this particular month that the consequences of our actions affect those that are perhaps not as empowered as we are. And therefore, when we have a responsibility or a position through which we can affect the lives of the less fortunate, it has always been our effort, and I believe it should be our collective effort, that as minimum the burden can possibly be that we place on the bottom of the pyramid. And sitting on that table over there is the Federal Minister for the Benazir Income Support Program, Ms.
Shazia Murray. And I must commend and compliment her personal efforts, but obviously the efforts of her institution. The first and only social safety net in Pakistan, the Benazir Income Support Program, provides economic support to the poorest of the poor, and particularly the women folk of the poorest of the poor. And we've seen time and time again how this institution has served us during the COVID pandemic, when we had no ways or means to get finances out there for those who were the most impacted. The Benazir Income Support Program, which is assisted by many countries sitting here today, was a key tool in achieving that goal. Once again, when the floods came, first during the rains and then it extended out through the floods, the most effective means to get direct support to the most vulnerable was through the Benazir Income Support Program. And while we're facing challenges at the moment in our finance ministry, still engaging with the IMF and other international financial institutions, while we still have the monumental task of reconstruction and rehabilitation for those affected by the floods, this government is going to consistently try, within the space that we have, to ensure that our policy benefits as much as we can the bottom of the pyramid, the least fortunate, and those far removed from the chaotic politics of the everyday politics of Islamabad. They're really facing challenges today, our own challenges, and those challenges that, as a result of course of events, we're facing today. So I thank you all for joining us here in the Foreign Ministry. I'm extremely grateful for the support that has been given to Pakistan in this difficult time. Our friends from across the world have stood with us during the COVID pandemic in providing vaccines and other support during the flooding. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत की गई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने सेक्शन 124A कलअदम करार देने से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। HRCP का कहना है कि सेक्शन 124A जैसे कवानीन इस्तेमारी निज़ाम की बाक़ियात हैं। इन कवानीन को सियासी मुखालिफिन और सिविल सोसाइटी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कवानीन हुकूक के अलंबरदारों, सियासी कारकुनों के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। HRCP के मुताबिक ये कवानीन सहाफ़ियों और तलबा के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अभी आपको बताएं कि वजारत ख़जाना के ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान की रेटिंग कम होने पर $2 अरब के सुकूक बॉन्ड का इजरा रोक दिया गया। IMF प्रोग्राम में ना होने के बायस भी सुकूक बॉन्ड के इजरा का फैसला मौखिर किया गया। ज़राए का बताना है कि रवा माली साल के दौरान $2 अरब के सुकूक बॉन्ड जारी किए जाने थे। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बायस बॉन्ड जारी करने के लिए ज्यादा मुनाफा अदा करना पड़ेगा। ज़र मुबादला कम और अदायगियों का बोझ बढ़ने के बायस ज्यादा शरह मुनाफा नहीं दिया जा सकता। डिफॉल्ट के खतरे के बाद सालमी मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना साउथवार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 3 एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के लिए IAFC को ट्रांजैक्शन मशीन मुक़र्रर करने की मंजूरी दे दी है। इस मुतालिक जारी एलामी में कहा गया है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स किए जाने हैं। शहर में जारी गैस लोड शेडिंग से कराची के लोग परेशानी का शिकार हैं। लोग कहते हैं माह रमज़ान में गैस की अदम दस्तयाबी से उन्हें सहर व इफ्तार में भी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद अहवाल बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम। अब वो वक्त दूर नहीं जब माजी की तरह लकड़ियों को जलाकर खाना तैयार किया जाए। माह रमजान में गैस की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। खाना बनाने के लिए गैस का घंटों इंतजार करना पड़ता है।
गैस है ही नहीं हमारे यहाँ। बस है ना थोड़ी देर के लिए आता है, वो भी इस तरह से जैसे है ना इफ्तारी तैयार हो जाती है इसके बाद आता है अजान के वक्त, और फिर वही 10 मिनट में 15 मिनट में चला जाता है। ना गैस आता है तो इतनी देर होता है, तकरीबन बंदा पकाने बैठता है तो गैस चला जाता है। तकरीबन यही लोड शेडिंग चल रही होती है। माह रमजान के मुकद्दस महीने में जहां एक जानिब एलानिया गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब सहर इफ्तार के औकात में गैस ना होने से रोजेदारों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। ना सहरी में गैस है, ना इफ्तारी में गैस है, ना अभी भी आप जाके देखेंगे तो बिल्कुल भी गैस नहीं है। सहरी में भी नहीं होती, इफ्तारी में भी नहीं होती, बाहर से सिलेंडर भराना पड़ता है, हमें सहरी बनानी पड़ती है, इफ्तारी बनानी पड़ती है। लोगों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 7-8 माह से गैस लोड शेडिंग का शिकार हैं, लेकिन अफसोस ये है कि माह रमजान में भी लोगों को गैस की अदम दस्तयाबी का सामना है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।